Hey guys, hello, welcome back to my channel Healing with Heena. This is Dr. Heena, and it's been long. I haven't posted anything on my channel. So today I was reading BBCR, and in BBCR we have the chapter on curve. So I thought of sharing a few interesting rubrics from BBCR related to curve, a single remedy rubrics rather. Uh, so yeah, that is why I am recording this video, and you can see that this BBCR is such a great book. I love this one, and yeah, I have used this was the book on which I have done my thesis, so that's why more special. So when you go into the chapter curve in BBCR, you will first see that he has given all the medicines in general which will have action on which is we can use in a curve. Okay, and so many long list of medicine is given, and after that alphabetically you will find all different types of cough. So different types of cough will be anxious. First it will start with anxious, then asthmatic or wheezy cough, barking, then catectic, catarrhal, chronic, clear, clear ringing, concussive, shaking, shattering, then croaking, croupy, crowing, deep, alphabetically like this. Now all sorts of types of cough you will find here. Okay, then one more, dull cough. Okay, dull cough means without resonance. It is exhausting, forcible, that is violent. And a single drug rubric here you will find gurgling followed by. So when we know that whenever the patient is coughing and after that if there is a gurgling sound, okay, gurgling followed by, the remedy is Heena. Then so alphabetically on hawking, then horse curve, hollow curve, and just below the main rubric you will find it compare croupy. Okay, so comparison is given just below to it. And very interesting rubric which I wanted to share is paroxysms. Okay, in the P rubric you will find paroxysms. So whenever the patient is coughing, so you need to note down the paroxysms. Like जब खांसी ऐसे खांस रहा है, ऐसा कितनी बार हो रहा है, it's like one time, दो बार, तीन बार, like that. And you will be amazed to see in BBCR that just based on this paroxysm of 1, 2, 3 curve, different medicines are given. Okay, so like if the paroxysm consists of only one curve, you can think of calcarea curve, which we all know. 2 curve is phosphorus, plumbum, pulsatilla. 2 or 3 is phosphorus and sulfur. 3 curve is phosphorus and stannum. 3 or 4 is belladonna and carboveg. But few curves, well, calcarea curve, laurocirrhosis, short curve, the first curve most violent and the succeeding curve weaker and weaker. Okay, पहले बहुत जोर 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 से खांसेगा पेशेंट, उसके बाद धीरे 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 कम हो जाएगा. The medicine is antimicrote. Okay, interesting now. Then another one you will have here is if curve is short, if it is long. Okay, if it is in 2 paroxysm, if 2 in quick succession, it is Merck and Sulf. 3 or 4 is Bell Carboveg. Okay, puffing cough is Naja. Then scrapping is Bryonia. Sharp is Stephysagria. Then straining type of cough is Thuja. Trumpet tone, this is AIPGT MCQ we used to get, and that is verbascum. Then weak is caladium. Then for whooping cough you have so many medicines. Then so this is the all type of curve. Pehle you saw कि alphabetically he has given all the different types of curve. Okay, then paroxysms and all type of curve, and uske baad then the time will start. Okay, first type, now the time will be like from morning. So if in morning, then evening, then forenoon, afternoon, evening, night, like that, midnight, then day and night. Okay, so this is, so first you have different types of curve, then in you have all the timing given for the curve, and then another heading is given which is excited or aggravated by. So we know in BBCR we have a different chapter altogether for aggravated. So behind each chapter you will find this way, this is the arrangement. You will find now the aggravation, then the amelioration, and lastly the concomitants, right? So if it is excited by,
Okay, acid food. Okay, acid food as if from, okay, that is thuja. Then if it is from air which is dry, it is aconite. Okay, and if it is air dry of evening, then it is murk. And then we have, if it is due to going into open air, the medicine is ipecac. And is asleep before getting to, it is murk. Okay, if cough is awaking him from sleep, that is hyoscyamus. Then bathing in sea, magmure. Then bending the body backward. Okay, if it is bending backward, that is cuprum, and if it is bending forward, it is digitalis. Blowing wind instrument, if person is having cough because he is blowing wind instrument, the medicine is stocks. Then because of bread, it is Kelly-carb. Then after that we have chest blood surging to is allosocotrina, chest pain in general Ranby, and chicken pox after. If there is cough because of chicken pox or chicken pox after, the medicine is antimcrute. Then if the person is having cough because of coffee odor, okay, coffee from odor of, the medicine is sulfuric acid. Then if it is from condiments, the medicine is tannum. And if it is constipation from, the medicine is sepia. Okay. Then if it is drinking after, then bryonia alba. And if the person is drinking very rapidly and then having cough, then silesia is the medicine. If it is because of inhaling dust, the medicine is natramure. Then if it is eating hastily, बहुत जल्दी जल्दी अगर person ने कुछ खाया और उसके बाद खांसी स्टार्ट होती है, तो the medicine given is silesia. And if it is after eating meat specifically, then staphysagria. Then solid food is cuprum. If the person had embarrassment because of any reason, if person felt embarrassed and after that the cough has started, so the medicine is ambragricia. Then emotions की वजह से हो तो drosera is medicine given here. उसके बाद अगर eruptions जो है repercussed हो गए हैं, ठीक है, तो डलका मेरा is the medicine. और फिर है फ्रूट्स की वजह से अगर किसी को कफ होता है, ठीक है, तो द मेडिसिन इज मैगम्यूर, फ्रूट्स फ्रॉम. If it is because of grief and care, okay, it is phosphoric acid. Hands uncovering, okay, हाथ अनकवर है अगर बहुत ठंड में पेशेंट जा रहा है, उसके बाद अगर खांसी स्टार्ट होती है तो दैट इज रस्टॉक्स. देन उसके बाद है हॉट फूड की वजह से हो रही है तो मेजेरियम इज द मेडिसिन गिवन हियर. There are many other rubrics I'm skipping and I'm just focusing on some interesting one. Okay, so alphabetically so many rubrics are given here. Then and yeah, if the person is having cough because of lifting heavy things after, so the medicine is, आप बताओ which is the medicine. Okay, that is ambragricia again. अगर बहुत देर तक पेशेंट जाग रहा है, ठीक है, इफ इट इज ही इज कीपिंग लेट आवर्स कीपिंग, ओके, दैट इज अगेन एम्ब्राग्राइशिया. सो मैंने एम्ब्राग्राइशिया वाला रूब्रिक्स हियर. देन वी हैव एंगर, मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर किसी को कफ हो रहा है और वो भी एंगर स्पेसिफिकली है पेशेंट में, तो एंटिम टार्ट एंड कैमोमिला इज द मेडिसिन. देन उसके बाद वी हैव नोशिया with cough is bryonia nux vomica. रीडिंग की वजह से अगर कफ हो रहा है तो सीना एंड नक्स वोमिका इज द मेडिसिन. पेपर की वजह से, ब्लैक पेपर जो होता है उसकी वजह से है तो सीना इज द मेडिसिन. देन पियानो प्लेइंग की वजह से कैलकेरिया कार्ब इज गिवन. राइडिंग इज सल्फ्यूरिक एसिड. देन स्क्रीमिंग, अगर बच्चों में होता है ना, बच्चे बहुत ज़ोर से अगर किसी ने चिल्ला दिया और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा तो अर्निका इज द मेडिसिन. वाओ, नाइस. स्नीजिंग के साथ प्रिसीड हो रही है अगर कफ, तो इपिकैक इज गिवन. ओह, देन अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग इज कफ सोसाइटी इन
ब्रैकेट में लिखा है ऑफ स्ट्रेंजर्स। अगर ऐसी कहीं जगह चले गए, ऐसे किसी पार्टी में चले गए जहाँ किसी को जानते नहीं है, ऑल आर स्ट्रेंजर्स, ओके, एंड देयर कफ इज स्टार्टिंग, द मेडिसिन अगेन इज एम्ब्राग्लाइशन बराइटा कप, क्योंकि बिकॉज दिस पीपल आर वेरी शाई टू गेट अलॉन्ग विथ अदर स्ट्रेंजर्स, so maybe that's why. Okay, then this is again interesting that curve standing erect. The medicine is natramure. Then again standing still during a walk, when like person is walking and suddenly अगर रुक जा रहा है उसके बाद curve start हो रही है. The medicine given is ignitia. I mean आई डोंट नो, पेशेंट खुद भी इतना याद नहीं रखेगा कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसके बाद ये हो रहा है, बट सिंस रूब्रिक एग्जिस्ट इन रेपर्टरी एंड वी डू हैव मेडिसिन फॉर इट, अगर कोई बहुत ध्यान से केस टेकिंग कर रहा है तो या मेडिसिन ढूंढना कितना ईजी हो जाएगा. वाओ. सो एंड वन मोर वी हैव टी. चाय के बाद किसी को हो रहा है तो फेरम इज द मेडिसिन. ओके, धूप में जाने की वजह से, सन इन दी हॉट, द मेडिसिन इज एन एंटिम क्रूड. Then we have if a person is having cough and toothache also, then sepia is the medicine. All right. And then if it is because of uncovering of feet or head, salicia is again the medicine. If it is wet feet getting, nux mochita is the medicine. ओके, वॉकिंग आफ्टर, हाँ वॉकिंग आफ्टर, रैपिडली आफ्टर, बहुत जल्दी 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 चलकर चले गए और उसके बाद खांसी स्टार्ट हो रही है, सिपिया इज द मेडिसिन. नाइस. देन वी हैव एमिलोरेशन वाले चैप्टर में यू विल फाइंड कि अगर बहुत पेशेंट को खांसी आ रही है, पेशेंट इज कफिंग एंड वाइल कफिंग द इफ पर्सन इज होल्डिंग द एब्डोमेन, ओके, इफ एब्डोमेन मस्ट होल्ड और फिर अच्छा लग रहा है, कम हो रही है खांसी, तो द मेडिसिन इज फॉस्फरस. ओके. देन जैसे बेड में पेशेंट बैठा हुआ है और उसके बाद वहाँ पर बहुत तेज़ खांसी, वहाँ से उठ के कहीं और चला गया, ठीक है, बेड गेटिंग आउट ऑफ, पल्सटिला इज द मेडिसिन. बेड गेटिंग आउट ऑफ इज अम्यूलरेटिंग, दैट इज पल्सटिला. ब्रेकफास्ट के बाद अम्यूलरेशन हो रहा है, कैलिकाब इज द मेडिसिन. चेंज ऑफ पोजिशन व्हेन लाइंग, इग्निशिया इज द मेडिसिन. ओके. अगर कफ मतलब खांसी आ रही है और खांसी को रोक लिया ना, सप्रेस करने की कोशिश की तो अच्छा हो जाता है, खांसी कम हो जाती है, दैट इज ऑल्सो इग्निशिया. देन इरेक्टेशंस अम्यूलरेट अगर कर रहा है तो सैंग्विनेरिया. अगर एक्सपेक्टोरेशन थोड़ा सा भी आ जा रहा है तो पेशेंट इज फीलिंग बेटर, द मेडिसिन इज एपिस मेलिफिका. Then if patient is feeling better by kneeling or getting on hands and knee position, that is Repertorium perforatum. If patient is feeling by lying on abdomen, then it is Brighter carb. If lying on back, it is Aconite. If patient is feeling better, menses before and during, that is Graphitis. And if person is feeling better by mental efforts, then Ignitia. Then if person is feeling by covering the mouth, okay, that is Rheumax. If it is better at night, then Bufo. Okay. देन अगर चुपचाप बैठ जाते हैं तो अच्छा लगता है, तो दैट इज क्वाइट इन सुराइनम. ओके. देन स्टूल के बाद अच्छा लग रहा है तो दैट इज बूफो. और क्या है, वॉमिटिंग के बाद अच्छा लगता है कोकस कैक्टाई. वाइन के बाद अच्छा लगता है सल्फर को. ठीक है. नाउ विल सी कंकोमिटेंट एंड देन विल एंड. सो इफ पर्सन इज हैविंग कफ, ओके, लेकिन कफ के साथ साथ इफ पर्सन having stitches in abdomen, okay, stitches in abdomen means sensation of stitches in abdomen is sepia. Okay. और then air hunger, मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसे करना पड़ रहा है, that is कार्बोवेज. ओके. देन उसके बाद है ब्लैडर में पेन अगर हो रहा है, कफ कर रहा है और साथ में ब्लैडर में पेन है, डिस्टेंट पार्ट में जो पेन हम देखते हैं दैट इज कैप्सिकम. देन अगर खांसी आ रही है और साथ साथ में जो ब्रेथ है हॉट लग रहा है, ठीक है, एंटिम क्रूड. देन स्नोरिंग अगर है, इफ पर्सन इज कफिंग हैविंग कफ एंड ऑल्सो स्नोरिंग इज देयर, चाइना इज द मेडिसिन. एंड आफ्टर दैट वी हैव व्हाट एल्स, ऐसे तो बहुत सारे हैं, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग अच्छा इंटरेस्टिंग वाला. हाँ, इफ पर्सन इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन अलॉन्ग विथ कफ, नेट्रम कार्ब इज द मेडिसिन.
If person is having disagreeable behavior with cough, then Heena. Then उसके बाद है अगर इफ आइज में हीट फील हो रही है तो सल्फर इज द मेडिसिन। और आइज में हीट हो रही है, सिर्फ हाँ गर्म लग रही है तो सल्फर है। अगर पेन फील हो रहा है पर्सन को, ठीक है, तो देन लेकेसिस। सो दैट इज आइज पेन इन अलोंग विथ कफ लेकेसिस। आईब्रोज में पेन हो रहा है तो रूमैक्स इज गिवन। ओके, देन उसके बाद हीट अगर सोल में फील हो रही है, हीट इन द सोल इज नाट्रम कार्ब। ओके, अगर फ्लैटर्स डिस्चार्ज अप एंड डाउन हो रहा है तो सैंग्विनीरिया इज द मेडिसिन। देन स्वेट अगर हो रहा है कि कफिंग के टाइम यहाँ पूरा स्वेट दिख रहा है अगर पेशेंट के, एंटिमटार्ट इज द मेडिसिन। और अगर वो फोरहेड पे ही अगर कोल्ड वाली फीलिंग आ रही है तो वेरेट्रिमल, वी नो दैट वन। अगर पेशेंट को गिडीनेस है अलॉन्ग विथ कफ, एंटिमटार्ट इज द मेडिसिन। हैंड अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो सल्फर है, अगर स्वेटी है तो एंटिमटार्ट है, अगर स्वोलन है तो एकोनाइट है। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव व्हाट वी हैव हाइपोकॉन्ड्रिया, दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। अगर लिम्स में पेन है तो कैप्सिकम, तो वो तो डिस्टेंट पार्ट वाला ही हो गया। अगर खांसी के साथ इरिटेशन हो रहा है लैरिंग्स में तो कौन सी मेडिसिन है, कॉल्चिकम आई थिंक। थोड़ा प्रिंट क्लियर नहीं, आई थिंक इट इज़ कॉल्चिकम। उसके बाद है नाइट स्वेट अगर हो रहा है तो नाइट्रम कार्ब है। ओके, देन वी हैव रिजिड बॉडी इज Heena। स्लिप, हाँ, इफ पर्सन इज हैविंग कफ, और कफ के साथ साथ इफ नींद में वो डर के उठ जाता है, ठीक है, स्टार्ट्स इन फ्राइट फ्रॉम कैलिब्रोम इज द मेडिसिन। ओके, अगर खांस रहा है और खांस ऐसा हो रहा है, पेशेंट विल से दैट डॉक्टर साहब यहाँ जब से ना मतलब इसको खांसी हुई है अगर, और तब से ना इसको बहुत नींद भी आ रही है, तो द मेडिसिन इज नक्स मोचेटा। दिस वॉज कॉमन एक्चुअली बट स्टिल इट इज़ देयर। देन उसके बाद है स्टिफनेस इन जनरल इज इपिकैक गिवन। स्वेलो मस्ट आफ्टर इज Heena। देन टूथेक अगर हो रहा है खांसी के बाद, तो खांसी के साथ साथ, तो लाइकोपोडियम इज द मेडिसिन। फिर वी हैव मोर ट्रैकिया, अल्सर हुआ है और उसमें भी पेन है तो कॉनियम इज द मेडिसिन। अगर यूरिनेट कर रहा है पेशेंट, अर्जिंग उसकी ज़्यादा हो गई है अलॉन्ग विथ कफ, तो देन वी हैव मेडिसिन इपिकैक। ओके, और यूरिन नहीं कर रहा है बिल्कुल तब भी इपिकैक दिया हुआ है। ओके, नाइस। सो देखो, रूब्रिक इज यूरिनेट अर्जिंग टू एपिकैक, यूरिन रिटेंशन ऑफ इज ऑल्सो एपिकैक। ओके, और साथ साथ वॉमिटिंग, अगर बीटर वॉमिटिंग हो रही है तो जिंकम इज द मेडिसिन गिवन। देन अगर जैसे खांसता है बच्चा है, सपोज खांसी आई, बहुत खांसा और उसके बाद ना रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो द मेडिसिन इज हिपार। ओके, सो वीपिंग आफ्टर द अटैक, द मेडिसिन इज हिपार। और खांसी के बाद अगर यॉर्निंग आ रही है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, एनाकार्डियम इज द मेडिसिन गिवन। है ना इंटरेस्टिंग? सो या, those were few curve rubrics from BBCR. If you like the video, मुझे बताना. I will start sharing some other interesting rubrics from BBCR. Till then, take care. Bye bye.